everyone and welcome back to the new video of this channel. So in this video we will discuss about the problem which is ballet parenthesis string lead code 678 problem. So let's see the problem statement. So problem is saying that we have given a string S containing only three types of characters: opening bracket, closing, and star. Return true if it is valid. So there are some conditions like if there is a opening bracket, so corresponding to that there should be a closing bracket also. So here is written that any left parenthesis must have the corresponding right parenthesis. Any right parenthesis must have a corresponding left parenthesis, and left parenthesis must go before the corresponding right parenthesis. Okay, and star could be treated as a single right parenthesis, a single left parenthesis, or empty string. So according to the condition, it should be converted. Okay, so if we have given this string, so it is a valid parenthesis because there is a opening bracket and corresponding to that there is a closing bracket also. So it is a valid parenthesis. यहाँ पे opening bracket then star then closing bracket. So this star can be converted in as empty string. So if it is a empty string, then opening bracket then closing bracket. So it is a valid parenthesis. And here this star can be converted as opening bracket, because if we convert it as opening bracket then it will be valid, because after converting the string will be like opening, opening, closing, closing. So a opening bracket and corresponding to that closing bracket is there. So that's why we will return true. So let's see the approach for this. There are some, you can see there are some examples like we have seen this example, we have also seen this example. If this example is given, we can't do anything in this problem because इस स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो उससे पहले करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट तो आ ही नहीं सकता. इन दैट केस विल रिटर्न फॉल्स. अगर ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सो हियर दिस स्टार कैन बी कन्वर्टेड एज ओपनिंग ब्रैकेट, बिकॉज इफ वी कन्वर्ट इट एज ओपनिंग ब्रैकेट देन this is the value parenthesis opening closing, and this is a closing, and corresponding to that there should be a opening bracket. So this star can be converted as opening bracket. After converting it will be valid. Okay, so as same as this, so we can convert one star. If we convert this star as opening bracket, so this is the valid parenthesis, this whole is the valid parenthesis, and this star, another star can be converted as uh, empty string. Yeah. So approach part is very simple. We have seen that this is there is a opening bracket, closing bracket. So we know that if parenthesis type problem comes, then in that case we think about the approach like stack type of approach. So if we use the stack, so see, if there is only opening bracket and closing bracket, then in that case we use only one stack. But here we will use two stacks because we have to keep track about stars also. Because stars can be converted as opening bracket, closing bracket, and empty string. So we have to keep track of these types of stars. So here what we will do, if we have given this example, so we will store the indexes of the particular character. So we will create two stacks, open stack and star. Open stack will store the character like opening bracket, and star will store the characters like star, and correspond not character, it will store the index of that particular character. So let's see this. If star is coming here, star is coming, so स्टार है जीरो इंडेक्स, तो जीरो को कर देंगे स्टार में पुश. ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, आगे चलेंगे, ओपन आ रहा है वन इंडेक्स, वन को पुश कर देंगे. देन ओपन आ रहा है अनदर, तो टू को भी पुश कर देंगे. देन थर्ड इंडेक्स पे क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट. सो क्लोजिंग ब्रैकेट में केस में क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ओपन में पॉप कर दिया, टू हट गया यहाँ से. नाउ अगेन स्टार इज कमिंग, स्टार आ रहा है फोर्थ इंडेक्स में, फोर को स्टोर कर दिया. देन अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट इज कमिंग, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो वन को पॉप कर देंगे, क्योंकि अगर ओपन सॉरी क्लोज ब्रैकेट आता है तो ओपन को तो हटाएंगे हम. ये तो स्टैक की अप्रोच होती है, ठीक है. देन अगेन सिक्स पर क्लोजिंग ब्रैकेट इज कमिंग. नाउ इन दिस केस वी विल सी लाइक ओपन स्टैक है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं. नाउ वी विल सी अबाउट स्टार्स. So stars, because we know that stars can be converted as opening bracket, closing bracket, and empty string. Now you can see this is a close parenthesis.
at index 6. So जो भी ओपन स्टार आना चाहिए, यहाँ पे ओपन तो बचा ही नहीं है, ठीक है, अब स्टार आना चाहिए वो 6 वाले इंडेक्स से पहले ही आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। अगर इसके बाद कोई स्टार आता है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्लोजिंग ब्रैकेट। सो जो इसके 6 इंडेक्स से पहले वाला स्टार है ना, वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। 6 इंडेक्स से पहले वाला स्टार कौन सा है, 4 है, स्टार इसमें देख सकते हो, ठीक है, 4 है। तो 4 कैन बी कन्वर्टेड एज फोर्थ इंडेक्स, दिस स्टार कैन बी कन्वर्टेड एज opening bracket. If we convert it as opening bracket, then this will be pop, and after this only one स्टार में वन एलिमेंट ही बचा हुआ है, दिस कैन बी कन्वर्टेड एज एम्प्टी स्ट्रिंग, सो इट विल बी ट्रू। So let's see this example also. If we can open bracket 0th index पे star 1 index पे open bracket 2 index पे star 3rd index पे star 4 index पे, now close bracket is coming. Now we will see like 5th index पे close bracket आ रहा है, तो 5th index से पहले वाले एलिमेंट्स में वो हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। वो पहले सबसे पहले ओपन ब्रैकेट में देखेंगे, अगर ओपन ब्रैकेट नहीं बचा हुआ तब स्टार्स पे देखेंगे, पर ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। दिस क्लोज ब्रैकेट कैन बी रिमूव्ड, लाइक नहीं, क्लोज ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ओपन ब्रैकेट शुड बी देयर, सो 2 को पॉप कर देंगे, 2 को पॉप करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ओपन ब्रैकेट है। अब नाउ यू कैन सी हियर, हमने ट्रेवर्स तो पूरा कर लिया, पर मेरे पास ओपन ब्रैकेट बचा हुआ है, ओपन ब्रैकेट के अंदर 0th इंडेक्स बचा हुआ है और यहाँ पे स्टार बचे हुए हैं, तो मैं 0 को 4 से हटा सकता हूँ, बिकॉज ये स्टार है, ये ओपन ब्रैकेट है। सो स्टार कैन बी कन्वर्टेड एज क्लोज ब्रैकेट, सो ओपन और क्लोज हट जाएगा। नाउ ओपन ब्रैकेट इज नल, मतलब कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, इन दैट केस वी विल रिटर्न ट्रू। So this was the approach using stack, but in this approach you can see we are using external space big O of n, but we don't want to use external space, so in that case what we'll do, we'll use a greedy approach for this. So greedy approach is very simple, we will create two pointers, two variables, sorry, left min or left max. Left min will show the like how many open brackets are there, minimum open brackets are there, and left max is showing that how many uh, minimum open brackets are there, but maximum, sorry, minimum nahi, maximum open bracket, and this will show minimum open bracket. Now we'll traverse the whole string and we'll check like open bracket is coming, so left minimum plus plus and left min max plus plus, एंड एल्स इफ केस इफ क्लोज ब्रैकेट इज देयर, सो क्लोज ब्रैकेट के केस में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, लेफ्ट मिन माइनस माइनस, लेफ्ट मैक्स माइनस माइनस। एंड इफ एल्स केस में क्या होता है, स्टार इज कमिंग, इन स्टार केस क्या करेंगे, लेफ्ट मिन को तो माइनस कर देंगे, बिकॉज लेफ्ट मिन इज शोइंग लाइक हाउ मेनी मिनिमम ओपन ब्रैकेट्स आर देयर, सो मिनिमम ओपन ब्रैकेट्स, minimum open brackets means if star is coming, like if star is coming, so star को अगर मैं क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ओपन ब्रैकेट भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ओपन और क्लोज दोनों मैच हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इन दैट केस लेफ्ट मीडियम माइनस माइनस, एंड इफ स्टार कैन बी कन्वर्टेड एज null string means empty string, so in that case left max plus plus, because उसमें मैंने ओपन ब्रैकेट्स में कुछ भी कम नहीं किया है, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स प्लस प्लस, इन आफ्टर दिस वी विल सी लाइक इफ लेफ्ट मिन इज लेस देन 0, in that case simply left min equals to 0, because left min, since left min can't be 0 less than 0, because it is a count of minimum number of open bracket, so it can't be less than 0, so in that case left min equals to 0, and if left min max is less than 0, in that case we'll return false, and after this we'll return this. So let's do the code for this. So coding part is very simple, we will apply left min equals to 0, uh, int left max equals to 0. Now we'll traverse for like auto ph belongs to s. Now we'll see if ch equals to ओपन ब्रैकेट, सो ओपन ब्रैकेट के केस में क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट मिन प्लस प्लस मिन, सॉरी, मिन प्लस प्लस एंड लेफ्ट मैक्स प्लस प्लस, ठीक है। इफ एल्स इफ केस में क्या आता है, इफ क्लोज ब्रैकेट इज कमिंग, ch इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट, सो क्लोज ब्रैकेट में क्या करेंगे,
कि दोनों को माइनस कर देंगे, लेफ्ट में माइनस माइनस, लेफ्ट मैक्स माइनस माइनस। एंड इन एल्स केस इफ स्टार इज कमिंग, स्टार के केस में क्या करेंगे, ये स्टार के केस में क्या करेंगे, लेफ्ट मिन को माइनस माइनस कर देंगे, लेफ्ट मिन को घटा देंगे और लेफ्ट मैक्स को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दिस we'll check like if if now we'll check like if अगर मेरा लेफ्ट मिन लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है। सो इफ लेफ्ट मिन लेस देन जीरो, अगर ये लेफ्ट मिन जीरो लेस देन जीरो होता है तो ये कंडीशन गलत है क्योंकि ये कभी जीरो ही नहीं हो सकता। सो इन दैट केस लेफ्ट मिन इक्वल टू जीरो। इफ लेफ्ट मैक्स इज लेस देन जीरो, इन दैट केस विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एंड actually this should come in this bracket, yeah. And after this we will return like if left min अगर जीरो हो जाता है, लेफ्ट min equals to zero, then we will return. So let's run this and see if this will work or not. Yeah, it is working perfect. Let's submit this. Yeah, you can see here it is taking 0 millisecond time and beats 100% of C++ users because it's a greedy approach. Here we are taking only big of and time complexity time, because in this case you can see here we are traversing this string only one time, so we are taking big of and time complexity and we are using big of one external space. In stack we are using external space, but here we are not using any external space. That's why it's a good approach for this, optimal approach we can say. So if you find this helpful then please like, share and subscribe. तब तक के लिए